नमस्ते एवरीवन। आज हमारे चैनल के लिए और हैबिट कम्युनिटी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन रहा है क्योंकि वी हैड अ चांस टू इंटरैक्ट विद नन अदर देन द लेजेंडरी किरण बेदी मैडम विद अस इन एन ऑनलाइन डिस्कशन। ये सेशन स्पेशली हैबिट कम्युनिटी के लिए था, वो एक्सक्लूसिव था, बट इट वाज सो यूजफुल दैट आई हैड टू शेयर इट विद आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। और अगर आप हैबिट के बारे में नहीं जानते हैं तो लेट मी शेयर इट विद यू। हैबिट इंस्पायर्ड है हैबिट बिल्डिंग ये वर्ड से। ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जो हमने डिजाइन किया है ताकि हम लोगों को अच्छी आदतें बनाने में जो सस्टेनेबल है उसमें हेल्प कर सके। हर किसी को पता ही होता है कि हमें योगा करना चाहिए या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, बट उसे कंसिस्टेंटली कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, इजंट इट? सो उसीलिए हमने ये प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया जो आपको मदद करता है हैबिट बिल्डिंग में, मतलब आपकी अच्छी आदत बनाने में, आपका रूटीन सेट करने में। और हैबिट के साथ आज लगभग 80,000 लोग हर दिन योगा और फिटनेस जैसी एक्सरसाइज करते ही है। साथ साथ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेरियस अदर programs like Marma, Ayurvedic Detox, Mindful Journaling, Juice Fast and many more such sessions। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमारे फ्री प्रोग्राम्स के अपडेट बिल्कुल आते रहेंगे। अब किरण बेदी मैडम की जर्नी, उनका काम और उनका सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है, ये मेरे लिए हमेशा से बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी रहा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव हैड दिस चांस टू टॉक विद हर एंड हैव हर शेयर हर लर्निंग्स एंड हर एक्सपीरियंसेस विद द एंटायर कम्युनिटी एंड आवर लवली मेंबर्स। आई एम श्योर आपको इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और मैं चाहूंगा कि आपको क्या सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो शुरू करते हैं। Thank you so much, ma'am, for joining us. I literally have no words that you have accepted our invitation. Of course, everyone, welcome to this event where we are going to talk about intentions to actions with none other than Kiran ma'am herself. She has worn multiple hats. उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी चीजें की है, but आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो definitely health है. So we'll start with this, like just let us know that this is the most asked question out of 100. I think we have got 200 people asking this question कि आप क्या करते हो ऐसा कि आप at the age of 74 you have so much of energy and you do so many activities. मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 74 तक कैसे पहुंच गई। सच्ची मुझे विश्वास नहीं होता, और जब मैं पलट के देखती हूँ, मैं देखती हूँ समय कितनी जल्दी बीत गया। और काश मुझे पता होता कि समय इतनी जल्दी बीत जाता है तो मैं समय को ध्यान से चलाती। पर क्या डिफरेंट करते हैं आप? लाइक आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट वुड बी डिफरेंट इन योर जर्नी इफ यू वुड हैव, लाइक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे कि लाइक बिफोर यू रीच 74 व्हाट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ और व्हाट यू शुड बी डूइंग? एक सबक मैंने सीखा है कि बड़ी जल्दी उम्र में समझ आ जाना चाहिए कि समय बड़ी जल्दी बीत जाएगा। इसलिए जो अच्छा करना है शुरू करो, जब भी समझ आ जाए उसको डिले मत करो। अगर फैमिली के साथ प्यार रखना है तो खूब प्यार रखो, शुरू से, बाद में नहीं। काम को ध्यान से करना है तो शुरू से करो, बाद में नहीं। और जो आपको अच्छा लगता है वो उसको बैलेंस कर लो, बाद में नहीं। बच्चों को अपब्रिंगिंग ठीक देनी है तो बाद में मत करो, अभी से। मुझे ये समझ आ गई कि मैं कभी नहीं सोचती थी कि जब मैं 20 साल की थी, 30 साल की थी, कि मम्मी डैडी चले जाते, मैं सोचती थी हर चीज परमानेंट है। मेरे मामा डैडी मुझे कैसे छोड़ के जा सकते, मेरी प्यारी बहन कैसे जा सकती, मैं कभी नहीं सोच सकती। लेकिन एक के बाद एक जब जाने लगता है, सब समझ आती है कि आप समय के मालिक नहीं है। तो अगर मुझे एक अकल आई, वो भी सबको बहुत कुछ समय जब पलट के देखती हूँ, काश मुझे समझ पहले आ जाती कि ये सब कुछ जाता जा रहा है। एवरी डे जब हम बर्थडे का केक काटते हैं, एक्चुअली इट इज 1 year लेस ऑफ आवर लाइफ। हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन ये भी जब अपने खासकर पेरेंट्स का बर्थडे जब मनाते हैं, इतनी धूमधाम से मनाते हैं, एनिवर्सरी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये मन में नहीं आता है हमारा 1 साल कम हो गया, राइट? ये मालूम ही नहीं है। तो इसलिए मैं अगर समझूं, अगर मुझे दोबारा जीवन जीना हो तो मैं हर चीज और भी प्यार से और दिल से करूं। चाहे फैमिली का प्यार है,
चाहे काम की ध्यान है, चाहे मुझे जो भी करना है, अपनी फिटनेस भी और करूं। और योगा तो छोटी उम्र से करूं, क्यों मैं बाद में किया? मुझे बहुत गुस्सा है कि मेरे स्कूल ने मुझे 2 चीजें पहले क्यों नहीं सिखाई? क्यों नहीं योग करने, योग के आसन पहले क्यों नहीं सिखाए? और नंबर 2, मेरी फिजियोलॉजी क्यों नहीं सिखाई कि हार्ट का मतलब क्या है, लिवर का मतलब क्या है, किडनीज का मतलब क्या है, लंग्स का मतलब क्या है, और मेडिटेशन क्यों नहीं सिखाई? तुम ABCD सिखाते हो, A फॉर एप्पल, मैं कहती हूँ A फॉर एब्डोमेन सिखाओ ना, कि पेट के अंदर क्या जाना चाहिए। राइट। सच्ची बहुत बेवकूफ हम लोग हैं। हम A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एब्डोमेन। टेल मी, मेरी एब्डोमेन का मतलब क्या है? एब्डोमेन में क्या पत्थर डाल सकती हूँ, कचरा डाल सकती हूँ? नहीं। तो मैं समझती हूँ कि आस्क मी सौरभ, अगर मुझे पलट के देखना है तो 74 इयर्स तो मुझे पता ही नहीं चला कितनी जल्दी बीत गए। और रोज जब मैं उठ के सुबह करती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक और दिन कम। लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि काश मुझे भगवान बता दे मुझे कितनी देर और जीना है। मैम, आपने ये बोला कि आप सुबह उठ के हर बार कुछ सोचते, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज्यादा लोगों ने पूछा है कि आपका कोई रूटीन है क्या? लाइक what is the routine that you follow? Like, is there something that you do after you wake up, or if you'd like to just share us कि आप exactly क्या करते हैं? Like, सुबह उठ के do you do prayer, or do you do meditation, or do you you have any particular set format for your day? हाँ है, मेरा रूटीन बड़ा बढ़िया है। फिटनेस तो मेरी रूटीन है। इनफैक्ट मैं फिटनेस नहीं करूँ तो मेरा एक मील चला जाता है क्योंकि भूख नहीं लगती। अगर मुझे खाने को एंजॉय करना है तो मैंने अपने आप को, अगर मैंने अपना खाने को एंजॉय करना है, देन आई मस्ट डू माई फिटनेस। अदरवाइज वो खाना की मेरी भूख उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए उसमें मैं चीटिंग नहीं करती, क्योंकि चीटिंग करने को मन भी अगर करता है तो मैं सोचती हूँ मेरा एक खाने की भूख कम हो जाएगी, दैट मींस आई हैव टू रिड्यूस दैट मील। सो इट इज लिंक्ड विद एपेटाइट। मेरी एक्सरसाइज जो है और एपेटाइट इंटरलिंक्ड है, इसलिए अगर मैं अच्छा एपेटाइट चाहती हूँ तो मैं फिटनेस को नहीं छोड़ती। फिटनेस को मैं दिन में रखती हूँ। वो अलग बात है कि कभी सुबह की शाम हो जाए मगर मॉर्निंग वॉक में नहीं गए तो इवनिंग में चले गए। लेकिन योगा जो है, मैंने देखा योग आसन आप शाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते मेरी नजर में, क्योंकि वो सिस्टम, वो जो मॉर्निंग सफल होता है उठने के बाद योग आसन के लिए वो बेस्ट टाइम है सुबह उठ के। सो मैं योगा भी रखती हूँ, उसमें मेडिटेशन भी है और शाम की मेरी वॉक। राइट। Are you an early riser? Like, लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम सुबह उठना जल्दी जरूरी है या नहीं जरूरी है? Like, is there a time zone that you prefer कि नहीं? Are you an early riser, or it's okay, like you give yourself enough time? How is it? उसमें मेरी रेजीम नहीं है। I get up when my body wakes up. Okay. तो अगर मैं अच्छी तरह हेल्दीली सोई हूँ तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उठ जाएगी between 6 and 7। और अगर थकी हुई है तो मैं उसको थकाती नहीं, मैं उसको रेस्ट देती हूँ, क्योंकि वो लिसन टू योर ओन बॉडी। आई डोंट पनिश माय बॉडी। बॉडी को कभी पनिश नहीं करना, बॉडी को इज्जत करनी, प्यार करना है, फील करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वही दोस्त है आपका, जीवन साथी तो आपका। I would want to ask this question, like, what is like there is a very sweet spot here, क्योंकि हम अपने आप को ये बोलेंगे तो how do we not go into that zone of laziness? Because सोना तो सबको अच्छा ही लगता है, लाइक हम अपने आप को, क्योंकि सुबह उठने के ना उठने के अगर हमें बहाने देने हैं तो इट्स सो सिंपल कि ओ किरण मैम ने बोला दैट आई शुड रेस्ट, तो आई वुड पोस्टपोन इट, लाइक हाँ ठीक है मेरी बॉडी अभी रेडी नहीं है, तो दैट वुड ऑल्सो गो इनटू दैट जोन की हाउ डू आई नो राइट कि भाई मेरी बॉडी अभी रेडी है उठने के लिए, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट जोन ऑफ लेजीनेस. हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? लाइक आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अदर्स. सौरभ, ये चीज मैंने ना जब मैं टेनिस खेलती थी, आपको पता है मैं टेनिस कॉम्पिटिटिव टेनिस खेलती, कई बारी मैं हार रही होती, मैं खेलते मैच हार रही होती, और मेरे डैडी मेरे साथ ट्रैवल करते होते, तो जब पापा ट्रैवल करते होते थे तो वो पर्दे के पीछे से मुझे आकर बोलते थे बाद विच रोना है हुन खेल है, बाद विच ना रोई हुन खेल है, हुन जितना है नहीं तो बाद से तू रोएगी। तो मेरे एकदम वापस जोश आता था, विच मीन मैं बाद में नहीं पछताना चाहती थी। तो मैं इसी तरीके से, मेरा अगर मॉर्निंग रूटीन चला जाता है तो मैं अपने आप से पूछती हूँ दिन बीत जाएगा, मैं बाद में पछताऊंगी, मैंने नहीं पछताना. I anticipate the regret and I don't want to regret. Right. So everyone, please listen to it carefully. ऐसे नहीं है कि हम मैम के वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट करके बोले कि अरे मुझे तो अपनी बॉडी को प्यार करना है तो मैं ज्यादा सोचा हूँ. क्योंकि लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं मैम, लाइक वी से समथिंग एंड दे लिसन समथिंग एल्स ओनली. एब्सोल्युटली. बट हियर आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक आप, यू आर अ पंजाबी, राइट? एंड
Punjabis are fond of food. So आपका कभी तो मन करता ही होगा ना कि अरे कुछ तो चीट डे हो या कुछ ऐसे जो चीट मील कहते हैं, कभी कुछ तो आपको लगता होगा कि कभी तो मैं चीट कुछ करूं ऐसे. सौरभ, मैंने कभी भी समोसा नहीं खाया, कभी नहीं खाया. कभी पूरी नहीं खाई, ओह माय गॉड. कभी कचौड़ी नहीं खाई, कभी पकौड़े नहीं खाए. मैं फालतू की चीज नहीं खाती क्योंकि मुझे फिर से बाद में पछताना पड़ेगा. दिस इज अ गुड मंत्रा टू हैव. आपको बाद में पछताना ना पड़े. लाइक वही करो लाइफ में जिसमें आपको बाद में ना पछताना पड़े. बट बिल्कुल ही नहीं. लाइक ऐसे कैसे हो सकता है मैम? यू आर अ पंजाबी, राइट? पंजाब में तो कितना खाने का क्रेज होता है. नहीं, मैं गलत चीज. सी, आई कैन हैव अ वेरी वेल मेड रोटी विद अ लिटिल बटर ऑन इट एटसेट्रा. ये चीट मील नहीं है, राइट? पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन ये जानबूझ के मैंने फ्राइड चीजें कभी नहीं खाई. बट आप ट्रैवल करते हो, कभी कहीं बाहर जाते हो, तो ऐसे लाइक कुछ तो और खाने का मन, लाइक टेस्ट करने के लिए पानी पूरी खाने का मन करता हो या कुछ गुलाब जामुन खाने का? कभी नहीं. अगर पानी पूरी को करना है तो सिर्फ कांजी पी लूंगी. Oh, nice. This is too much of dedication, ma'am. I don't know how do you do it. Like this is so great. तो another question which a lot of people are asking, like कि जैसे काफी लोगों के साथ ये क्वेश्चन होता है कि हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका मूड कभी ऊपर नीचे हो गया? और अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या करते हो उस सिचुएशन में? ये भी अगर आदत हम लोग बचपन में डाल ले टू बी योर ओन फ्रेंड, तो वो भी बड़ा ट्रेनिंग में बाद में एज यू ग्रो इन एज आपके काम आता है. एज ए स्टूडेंट मैं कई चीजें अपनी फैमिली के साथ नहीं शेयर करना चाहती थी ताकि मेरी फैमिली स्ट्रेस ना हो या अपनी बहन को बताऊं वो परेशान ना हो. तो मैं सेल्फ टॉक करती थी और अपनी एक डायरी लिखती थी जिसको अपने माय डियर फ्रेंड आज मेरे से ये हुआ. और उन दिनों में कोई कंप्यूटर नहीं होता था, डायरी छिपा के रखनी पड़ती. राइट राइट राइट, करेक्ट. तो मैं डायरी लिखती थी. कई बार बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम हो गई. आपको भी हुई है ये वाली प्रॉब्लम? क्यों नहीं होती, होती है. राइट. तो मैं ये करती, तो अपने आप से बात करती थी. तब मैं लिखती थी. तब वो ट्रेनिंग बाय जर्नल थी. That's going writing your journal. Right. We have this program for our community members called as Mindful Journaling, where we, there is a trainer with us. She's an expert in teaching how to write, because sometimes आपको नहीं पता होता है ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. So एक प्लेटफॉर्म वो हमने क्रिएट किया है. But thank you so much for mentioning that. इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने बताया. So that next time when it happens, more people can take benefit of it. माइंडफुल अब मैं नहीं लिखती, लेकिन अब मैं लिखती हूँ क्योंकि मैं लिखती हूँ अगर मैं नोट्स पे लिख दिया और वो सर आईटी में मेरा ऑफिस भी पढ़ देगा. अब मैं सेल्फ टॉक करती हूँ. Right. I talk to myself while walking. So I self-talk, which means you are thinking. You may not talk loud, but you can clear your thoughts. That means you are a friend and you resolve your issue with it, for and against. Right. तो मूड स्विंग में पता चल जाता है कि मेरा मूड इस वक्त क्या हो रहा है. So that means self-observation. मैंने विपश्यना मेडिटेशन कोर्स किया है. Right. और विपश्यना से it's all about self-observation. It trains you to self-observe. Right. Can you just talk more about meditation, ma'am? Like, how does it make a difference in anyone's life? Or what is the benefit that you have seen yourself? You become very sensitive to what's happening to you. अंदर खुशी की लहर आ रही है कि परेशानी क्या आ रही है. Are you going into the future? Are you going to the past? ये नहीं है कि मैं past में नहीं जाती. I miss my parents. I miss my family. And I also regret certain things I did. And I also run into the future that मैं जब बड़ी होंगी तो I don't want to die in a hospital. I only pray I die while at work, like Dr. Kalam did. Dr. passed away while teaching. तो कई बार मेरा भी फ्यूचर में चला जाता है कि मेरा जाना कैसे. I don't want to trouble any friends. I don't want to trouble anybody to come and keep visiting me with flowers and I get poked by the doctors. I don't want to do that. I want to avoid. मेरी प्रार्थना भगवान से यही है. So वो है कि ये मेरा भी माइंड पास्ट में भी जाता है, फ्यूचर में भी जाता है, लेकिन मेरे पास है awareness to bring it back. So that means if you are aware, that means you are the mind over the mind. So मैं हमेशा mind over my mind रखती हूँ कि माइंड को कहूँ कि यू आर ऑन ड्यूटी विद मी, आई एम द वन इन चार्ज. तो तुमने तो मुझे पास्ट में ले गए, तुम भी मुझे फ्यूचर में ले गए, लेकिन मैं वापस आती हूँ. तो आई ट्राई एंड कम बैक. That's so interesting. So I hope everyone also gets a little more inspired to become regular with their meditations. तो एक बहुत ही बड़ा interesting question पूछा है यहाँ पे कि if you are reborn as Kiran Bedi and if you feel that you would do differently and we would want like a distinct answer for like your 30 years of age, 40 years of age, 50 years, 60 years, ऐसे 4 कैटेगरी है और हर 10 साल में आप क्या अलग करते हैं. So this would become like an advice for those who are in their 30s right now, 40s right now, 50s or 60s right now. So we'll go with 30 first.
30 is full of energy. That means अपनी energy को waste मत करो, energy को fritter around मत करो, because that energy is not going to come back. So I would say, be aware that this energy is not going to increase, it will decrease. And you're starting life. That means you're experiencing life. You're starting family relationships. You're making friends. You're traveling. You're working. You started your work. You're growing in work. So that time is your energy. उस energy को वहीं लगाओ ज़्यादा जो आपकी प्रायोरिटीज है, जो आपने प्रायोरिटीज लाइफ में बनाई. सो रिमेंबर एट द एज ऑफ 30 यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ. डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी. हम लोग उस वक्त ड्रिंक अवे करते हैं, गैम्बल अवे करते हैं, लेट नाइट्स ड्रिंकते हैं, बच्चों को अपने आप पल जाएंगे, रिश्तेदारी को ग्रांटेड ले. डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड व्हेन यू आर इन 30. Similarly, your expenses. Don't waste away your money. 30 is the time to put your life on track by right kind of energy. So I would say 30 is very important because you've just entered your profession. When you're 40, you are arriving now towards responsibility. So then be very responsible. If you use your energy well, then you're responsible. Now your children are growing up. You're moving towards higher promotions. You're becoming leadership positions. Your management issues. You've got social responsibilities. That is when you are now showing. You are young still, but now Right. you're a responsible young man or a woman. It's very, very important. So 40s is this. 50s is consolidating. I would say in 50s you start consolidating because now you're nearing your retirement in 60 plus. Now, how do you want to do post-retirement is your issue. And the way you've left 50 to 60 is your post-retirement. If you've read well, if you've been fit well, if you kept healthy well, if you kept your finances in order, if you got your family in position, in things like, if you had your command over your life, you've been in charge of your life, your post-retirement remains under your control. Otherwise, आपको पता ही नहीं चलेगा कि after 60 इतना वैक्यूम आएगा रिटायरमेंट के बाद कि आपको पता नहीं करूंगा अब मैं करूं क्या, तो फिर पछतावा आएगा. And that is what is called depressions and health issues. And 60s, like towards 60s, 70s, 60s if is there's very someone good who wind up. 60s it start winding up beautifully. And then it's knowing thyself. 60s is an area where you start knowing yourself. So while you're consolidated, it is now you are your own space. Now you're your own master. Then you have an opportunity to know thyself. You can travel, spend time with your family and friends more because now you don't have masters. If you're in government service, you're not employed. You don't have a regime. Then you have to self-regulate. But I would say anybody in government service or wants to retire at 60 must start preparing for retirement 3 years prior so that you stay occupied. Like for instance, I started my 2 non-government organizations when I was only 30, 35. Wow. And today my 2 NGOs are 35 years old and I have so much to contribute to give. So anyway, जो आपका passion है उसको अर्ली शुरू करो. Right. सोशल कॉज के साथ अपने आप को जोड़ लो. Between 30 and 40, connect yourself with a cause which will go beyond your retirement. Then you stay engaged. So, of course, like we spoke about so much, but would you want to share like what like there are so many women who feel that they are bound by family today. So, like of course you have been through like आपका भी family था, आप सब कुछ होते हुए भी आपने सब कुछ किया. Like so ये कैसे possible है? Like how would a woman who's feeling right now कि अरे मेरे पास family की इतनी सारी responsibility है, तो how would I break free and then do what I want to do from within? पहली बात तो जिस स्टेज पे भी हम लाइफ में हैं, एक्सेप्ट करें जो है, एक्सेप्ट करें, या रिजेक्ट करें या चेंज करें, पर पहले एक्सेप्ट करें जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करें. एंड देन स्टार्ट सीइंग व्हाट यू वांट. इफ यू आर हैप्पी विद इट, सस्टेन इट, कंटिन्यू टू डू इट दैट सेम वे. If you want to change it, identify what you want to change. How will you change? Whose help do you need to change? What are the resources you need to change? That's your self-thinking. Or if you have friends and if you have partners, good spouses in life, then you can understand how do you conduct yourself. How many times you want to be a mother or how many times you want to be a father. You got to be clear. Or do you want to be married and yet not have children? Take up those decisions. The point is acceptance first, then change what you can, and then or get away. Don't lead a sad, dismayed life. No, either change or accept or modify. But don't go back and forth. Don't repent. Right. But I also feel sometimes that women have their like ऐसे वो मन में हो जाता है कभी-कभी कि अरे ये तो fixed है, अभी इसका क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है. And then internally they are feeling so much, but then they don't have a way to vent it out maybe, or I don't know. So would you say something for them like
अगर आपको ऐसा लग रहा है, और बहुत बार प्रायोरिटाइज भी नहीं करते, लाइक उनको लगता है कि हाँ ठीक है हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड देन नथिंग, लाइक रियली दैट टाइम नेवर कम्स। लाइक वी ऑल नो दैट बाद में कभी नहीं होता है वो। जैसे आपने तो शुरू ही में ये बोला कि अभी करो जो करना है, बट वो कभी कभी नहीं आ पाता है मोटिवेशन। सो हाउ डू यू कीप, लाइक हाउ डू यू पुश योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन? It's a very careful awareness. It's called, the life is called, be watchful. Be aware of what are you thinking now. Are you into decline, or are you solving, or are you part of the problem, or you the problem? Are you solving the problem, or are you adding to the problem? What? By your own thinking. So your awareness. Now suddenly nothing can change. Correct. It takes time. So it's a one thought at a time is a habit. Every thinking style and attitude is a habit. It develops over a period. That means every day, bit by bit. Like meditation silence of thoughts doesn't happen as I sit and shut my eyes. But you are progressing. Even if there's a crowded cluster traffic in the mind, doesn't matter. Every time you are watching your breath, even with your eyes closed, you've made a progress. You've come under control. Like for instance, how do you control anger every time? Is becoming aware that you're getting angry. Right. So, and then becoming aware is start taking deep breath, take a glass of water, go for a walk, get into a prayer, or call a friend and go listen to some music. There's so many strategies which may suit you as a person. Like I go for a walk. If I'm under stress and I find my mind declutters and it starts give you offers and solutions and ideas and becomes creative again. So my next question would be for working professionals. Like you have been a working professional all your life, most of your life. So we would want to know, like, what are the certain habits that you used to follow very particularly while you were in that regime, and that sits like, because sometimes it happens so that हम लोग काम ही करते रह जाते हैं और फिर हेल्थ रह जाता है। तो ऐसे कुछ टिप्स या आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहेंगे जिससे हम अपने हेल्थ को नजरअंदाज ना करें, बट हम फिर भी सक्सेस के लिए we can put all that effort. So any practical tips if you would want to give on that? I'm a very strong delegator. I delegate what I can delegate. As a working woman, if I can buy time, nothing better. When you buy time, when house management is delegated, cooking is delegated. Because if you like cooking, then it's a relief. Then it's a relaxation. But if you don't like cooking and you don't have the time, delegate. Pay for it, but delegate. Third is family support. Always value the near one's support. Value that it's most precious. For a working woman, family support is critical. Delegation is critical. And her own rest time and me time is very critical. She must read, she must exercise, she must go for a walk, she must go into the nature, and she has her own quality time. These are very, but how will she do it if she doesn't delegate? Which means we continue to save. No, I would say spend and buy time, because time cannot be lifted from the market. How will you buy time? If you have house help, a good secure house help, if you can get, and if you have family support, nothing like it. But the family must know that this is a time which you will spend to yourself. But also team building at work, delegate, give credit to people, recognize them, let them grow, but give them the credit so that they love to work for you. So team building at work, team building while leading, taking responsibility, taking on the risks, trusting relationships. Similarly, respecting relationships at home, trusting relationships at work, and delegate. Every minute, whatever I can delegate, I will. What I can't delegate, I won't. I'll take full control. So I think very important for working women is save also, but spend also. But spend for your comfort. That's great. So we have just one or two more questions for you. Like, everyone knows that, like, Kiran Bedi ऐसे बोलते ही मन में ऐसा था, fearless, very courageous, super strong, brave, powerful. So like, is there any secret to build that inner strength, or like how can we do it if we want to? Like, कैसे ऐसा हो कि मतलब you are like ऐसे बाहर आ रहा है पूरा अंदर से कि यार कितना fearless attitude है, तो ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ? Thought I lead a life of acceptance. I'm taking life as it comes. Comes for the day. It comes with the challenge. I look into the challenge, into the eye of the challenge. I don't run away from it. So I live by the day, one day at a time. And one morning at a time, afternoon, evening, night, everything has a reason. Every part of the day has its own value. Right. But like, how would it make us fearless if we are living just by the day? Or I would feel कि अगर मैं ऐसे जीऊंगा तो मैं तो कुछ भी करूंगा. Like, I would not even work. Like, if I have to live just by the day. So I know this is a very popular thing कि आपको हर दिन जीना चाहिए. But if I like, I'm just giving my personal example. मुझे अगर ऐसा होगा कि I just have to live this morning or this afternoon, I would probably like do time pass or just like not do what I'm supposed to do. When I'm
thinking about the future in terms of कि मुझे और आगे क्या करना है, that drives me to work today. But so this is my personal question to you then, and I'm not able to get that कि इसमें कैसे I would become a fearless person. I have like मुझे बहुत चीजों में लगता रहता है कि अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, yeah, if I would be able to do it or not. Like given this conversation, I was literally a little scared before we even started this conversation कि अरे पता नहीं क्या होगा and would I be able to host it properly and all. So this is something that goes in my mind. So how what would you say for this? It's not fear, but focus. Move towards focus rather than the fear. Fear is an apprehension where you're not sure what's happening. Right. Moment you identify that you do not know, this is unpredictable, then you start focusing on what can you do. And every situation is not a happy situation. There can be moments of sadness, grief, and unpredictability. But the best is identify the fear, but switch the fear to focus on the possibilities and solutions, and just hope for the best. Done. Great. That's really insightful and helpful. I'll also try to focus a little bit more. So we have the last segment and that is rapid fire. हम लोग आपसे 5 सवाल पूछेंगे and आपको एकदम जल्दी बताना है जो भी आपके मन में सबसे पहले आता है. Okay. So what is your favorite form of exercise to stay fit? I love my walk. You love your walk. Like that's your go-to exercise format कि अगर कुछ भी लगता है तो walk कर लो. चलो. Great. So what is that book if you're currently reading any book, what's that? I read not one book at a time. I read 3-4. Okay, so let us have those 3-4, or maybe the best one that you're loving right now. No, books which I keep with me are 2-3 books which are always with me in my bag. One is the Bhagavad Gita. That's amazing. And number 2, I love Shiv Khera's book, You Can Win. Okay. Then I love Napoleon Hill's book, Think and Grow Rich. Yes. 3-4 books are always by my side. But I keep reading. But remember, you can't read a book. You go back to reading certain pages you mark. Okay. But what I do read is not fiction, but I read non-fiction. Perfect. Who's your role model? Like everyone here on the call, I'm sure most of them consider you as their role model. Like who's your role model? Whom you used to look up to? कि अरे मुझे ऐसे बनना है बड़े होके. I don't have one role model, but I have people, persons who I feel I look up to. I respect them for their courage, for their sacrifice, for their wisdom, for their knowledge, for their skill. And every person is uniquely different. And I listen to lots and lots of YouTube sessions. YouTube today is a gold mine. You can learn everything today, a lot of attitudes and positivities, life's lessons from philosophers and teachers. So YouTube today is my go-to place. Okay. Any YouTuber whom you like or who's your go-to person? There are many. There are scholars. In fact, आप मेरी अगर बड़ा interesting बात है कि मैंने इतनों को subscribe किया है. And do you know what? The YouTube itself does a great mix for me. Correct. Right. मैंने योगा को करा है तो योगा के सारे आने लग जाते हैं. क्या आप हमारे चैनल पे भी कभी-कभी आते हैं मैम? मैंने आपको देखा है. Oh, thank you so much. संगीता ने दिखवाया है. Oh, that's great. Thank you, Sangeeta ji. मैं भी thank you बोल देता हूँ उनको. Okay, so this is exactly our next question as well कि कभी-कभी आप जैसे हम बहुत सारे लोगों को आज ये दिक्कत होती है कि वो स्क्रॉल करने लग जाते हैं. तो do you also scroll some shorts और Instagram पे कभी आप टाइम पास करते हैं? यही तो स्क्रॉल करती हूँ YouTube में. आज मैं सेशन कौन सा इंटरव्यू देख लूँ, कौन सा सेशन प्रवचन देख लूँ, कौन सा थिंकिंग्स देख लूँ. So I scroll for these. You never scroll like ऐसे randomly कुछ तो scroll कर रहे हैं. ऐसे लगा 5 मिनट देखेंगे but 1 घंटा चला गया. ऐसे होता है कभी I आपको? scroll for news. I look for what is live. I scroll for what am I looking for inside, and I get it. Okay, great. So you don't randomly scroll. Okay, that's perfect. So we would want to know what is that one thing that you do every day? Like एक चीज तो आपको हर दिन करनी ही है. कुछ भी हो जाए मिस नहीं होगी. गलती नहीं करनी जानबूझ के. Okay, but ओके ग्रेट. ठीक है. और आखिरी 2 क्वेश्चन पूछने हमें आपसे बस. दिस इज अनदर क्वेश्चन बाय ऑफ कोर्स अ कम्युनिटी मेंबर. आपको अभी आगे क्या करने का मन है? लाइक व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन लाइफ और व्हाट इज योर फर्दर गोल इन लाइफ? Continue to be worthy, continue to be self-worthy and worthy for others, but also move towards greater spiritual life. Okay, great. And one final advice for all the community members, and they're all like wanting to build a habit. They have changed their mindset from more of like rather than result oriented to process oriented. If you would want to give them one advice, what would be that? अपनी लाइफ में gratitude लाने के लिए which gives you great joy and happiness is
link yourself with some cause you're associated with. कहीं ना कहीं गिविंग कॉज में, चाहे वो फैमिली में है, चाहे फ्रेंड्स में है, चाहे नेबरहुड में है, चाहे गांव में है, चाहे सोसाइटी में है, किसी ना किसी rising above yourself, where you recognize that you are gifted. God has given you health, because once you got good health, I think you got it all. Right. Actually, health is everything. Because उसके बाद ही सब कुछ है. Means you are your own life partner. After all, what is your life partner? Life partner is you, your body. More than anybody else, your life partner is your body. And if it is healthy, then you got great company. And after that, grow up, अपने आप को किसी न किसी कॉज के साथ लिंक करो, उसमें एक्सप्रेस करो ग्रेटिट्यूड, उसमें जो जॉय मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रेटिट्यूड आएगा. That means you'll always be in a process of balance. Right. We start, I would want to share this with you, that we start our session with a practice of gratitude for 1 minute. हम लोग हर session हमारा जब शुरू करते हैं तो हम 1 minute आंखें बंद करके, I tell everyone that gratitude is not like an emotion which comes on its own. You have to practice it. तो हम लोग हर दिन 1 minute gratitude practice करते हैं, फिर छोटी सी प्रार्थना करते हैं जिसमें हम बस थैंक यू बोलते हैं, एंड देन वी स्टार्ट विद आवर एनी एक्सरसाइज. सो दैट्स व्हाट वी डू. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स. आपने एक ऐसा जीवन जिया है जो लाइक ऐसा लगता है किसी को भी, अरे अगर मुझे चाहिए अपना जीवन तो ऐसा होना चाहिए, लाइक ग्रैंड एकदम. सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड दैट्स इट. Thank you so much for joining in. Thank you everyone for posting your questions as well. Thank you, ma'am. Thank you, Saurabh, and congratulations to you for having made such a great contribution in society at such a young age. Today, every family needs what you're giving them. You are restoring health, social, physical, mental health, emotional health in the society, which is keeping people healthier. I think you are doing a very creditable work. Thank you so much, ma'am. That's like really wonderful to hear from you. So, thank you everyone again, and we continue to build habits. अब हमने किरण मैम से भी सुन लिया है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तो अब अगले 1 महीने के लिए हम लोग एक we can give this as a gift that we become regular. Okay, so I would want everyone to type it in the chat box that I'll be regular. And this would be our gift, a promise that we make, Kiran ma'am, कि हम लोग अगले 1 महीने के लिए रेगुलर रहेंगे. I'm not going to say कि हम पूरे साल भर रेगुलर रहेंगे. That would be really impractical. But 1 महीने के लिए छोटा सा संकल्प लेते हैं, छोटा सा इंटेंशन लेते हैं, and that would be a gift for her time that she gave us. What do you think? Good idea? Okay. Thank you so much, everyone. Bye bye. Good night.